Good morning everyone. My name is Supriya Kumari. Welcome to my YouTube channel. Now we will learn reproduction in animal. So, first we will learn about amphibian. You know amphibian? The animal which lives on both land and in water is called amphibians. Okay. So, amphibians such as frogs lay eggs. Okay, you know that amphibian lay eggs. So, a frog lay eggs 100 of eggs in water. The frogs lay eggs in the water. It lays 100 of eggs. Okay. So, this cluster of eggs are called spawn. Okay, you can see this cluster of eggs are called spawn, which the frog lays. That cluster of eggs is called spawn. Eggs are surrounded by a jelly-like substance for the protection. Okay, the eggs of the frog called spawn are covered with jelly-like substance for protection. When the egg hatch, tiny organisms called tadpoles come out of the eggs. When the eggs hatch, means when the eggs broke, the tiny organisms called tadpoles come out of the egg. So, the tadpoles do not resemble the frog and look like a fish. Okay, the tadpoles. What is tadpoles? The young ones of the frog is called tadpoles. So, the tadpoles now do not resemble like a frog. Okay, it resembles like a fish. It looks like a fish, and it also has a tail. Okay, they even have small gills to breathe. Like the fishes have small gills to breathe, even the young ones, the tadpoles, also have gills to breathe. They survive in water because of gills and eat small plants. They survive in water. The young ones of the frog survives in water because they has gills and eat small plants. So this is the life cycle of a frog. So now we will see. So first, this is frog with lungs, means an adult frog. Okay, that lay eggs in the cluster. Okay, that cluster of eggs are called spawn. Yes, no. That cluster of eggs are called spawn. And from that spawn, the eggs, that spawn eggs, that's the eggs, from that it hatches. It breaks and from the tadpoles come out. And after some days, the tadpoles with hind legs, the tadpoles will come hind legs. In the tadpoles, they will be developing the hind legs. After this, tadpoles with fore and hind legs, the tadpoles will be developing to 4 legs. Means not 4 legs. Means 4 means the front legs, and hind leg means that's a back leg. That's a hide. Okay, that's hide. So after tadpoles with 4 and hind legs, after that they become as frog leg and they have a tiny tails still. And next, the tails will be disappear and they will become as a frog with lungs. Means they does not have a gills. They become a adult frog. So like this, once again the frog will give spawns, means eggs. From that, like this whole process will be repeating. Okay. So now I will explain you this all in Hindi. So ये क्या है? तो हम लोग सीख रहे हैं रिप्रोडक्शन एनिमल का पार्ट 2. सो ये क्या है देखते हैं. तो पहले हम लोग सीखते हैं एम्फीबियंस. एम्फीबियंस सच एज फ्रॉग ले एग्स. एम्फीबियंस मतलब आपको पता है, मैंने द एनिमल किंगडम में बताया था. एम्फीबियंस मतलब जो एनिमल्स पानी में भी रहते हैं और लैंड में भी रहते हैं उससे बोलते हैं एम्फीबियंस. जैसे फ्रॉग अंडे देते हैं, जैसे क्योंकि लिए वो एम्फीबियंस भी अंडे देते हैं. ठीक है.
A frog lays 100 of eggs in water. जो frog होता है वो 100 eggs देता है, ठीक है, पानी में वो भी. So this cluster of eggs are called spawn. ये सब जो ग्रुप होता है सब एक ग्रुप में ही 100 eggs देता है frog. So इस eggs को बोलते हैं spawn, ठीक है. Eggs are surrounded by a jelly-like substance. जो eggs होते हैं उसके वो surrounded है jelly जैसे एक substance से, क्योंकि उन्हें protection चाहिए. Okay? When the eggs hatch, tiny organisms called tadpoles come out of the egg. जब अंडा टूटता है उससे छोटे छोटा organisms, okay? मतलब छोटे छोटे organisms tadpoles उसे बोलते हैं, वो आते हैं बाहर, ठीक है. The tadpoles do not resemble the frog and look like a fish. जो tadpoles होते हैं वो frog की तरह नहीं दिखते हैं, ठीक है, वो एक fish की तरह दिखते हैं और उनके पास एक पूंछ है, ठीक है. They even have a small gills to breathe. Gills मतलब small pores होते हैं उनके पास जिससे वो breathe करते, ठीक है. They survive in water because of gills and eat small plants. मतलब जो tadpoles होते हैं वो पानी में रहते हैं और उनके पास gills है जिससे वो पानी में रह सकते हैं और छोटे छोटे plants को खाते. तो ये है लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग. फ्रॉग कैसे उसका लाइफ साइकिल देखते. तो पहले अडल्ट फ्रॉग रहता है, फ्रॉग विथ लंग्स, ठीक है. और नेक्स्ट वो अंडा देता है, उसे बोलते हैं स्पॉन. और उसके बाद इस अंडे से छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स निकलते हैं, उसे बोलते हैं टैडपोल. और फिर टैडपोल्स होते हैं उसे हिंड लेग्स आता है, मतलब पैर आता है, मतलब वो छुपा हुआ रहता है, ठीक है, वो छिपा हुआ रहता है, उसे बोलते हैं हिंड लेग्स. और टैडपोल्स उसके बाद टैडपोल्स विथ 4 एंड हिंड लेग्स, मतलब जो टैडपोल्स होते हैं उसका अभी छिपा हुआ भी लेग्स है और आगे का लेग्स है, ठीक है. और ये ही टैडपोल्स अभी फ्रॉगलेट बनते और अभी भी इनके पास छोटा सा पूंछ होता है. उसके बाद ये फ्रॉग विथ लंग्स बनते, ठीक है, जब इनका पूंछ भी चल जाता है और ये पानी में ज्यादा रहते नहीं, ओके. सो अभी ये अडल्ट फ्रॉग बन जाता है, फिर अडल्ट फ्रॉग से वो फिर अंडा देता है और फिर से ये पूरा प्रोसेस से चलते रहता है, ठीक है. सो अभी मैंने इतना ही एक्सप्लेन किया था. तो अभी हम लोग सीखते हैं reptiles. So now we will learn about reptiles. Reptiles such as turtles and crocodile also lay eggs. Okay, reptiles also lay eggs like turtles and crocodile. Turtle is actually similar to the tortoise. You can see the turtle here. That is and turtle. Okay, that's a turtle. So the turtle is similar to the tortoise. And turtle and crocodile also lay eggs. They do not look after their eggs and move away like the crocodile. The crocodile do not, if they lay eggs, they do not sit there only and see the and they do not sit there and protect the eggs. They move away. Understood? Turtles live in water, but they lay eggs on land. Okay? They make a hole in the sand on the beach, lay eggs in the hole and cover the eggs with sand. Okay? Crocodile lay their eggs in a hole, okay, in the ground. The eggs of the most reptiles have a soft shell. Okay, so now we will learn about butterfly. Butterfly also lay eggs, means the insects also lay eggs. So the butterfly lay eggs underside of the leaves of different plants. The butterfly lay eggs in the underside of the leaves. This is the leaf. It lay eggs underside of the leaf.
in the different plants. The egg hatch out into larvae that resemble small worms are called caterpillars. The eggs hatch out of the butterfly, and from that the larva comes that resembles like a small worm, but they are called as caterpillars. So now we will see the life cycle of butterfly. Life cycle of butterfly. So see, this is the life cycle of a butterfly. First, an adult butterfly will be there. That in the underside of a leaf, they lay eggs, and from that eggs, the caterpillar, a small worms called caterpillar, hatches out, and then the caterpillars started to eat leaves. Okay, and after eating leaves, it form a pupa. Okay, first it form a cocoon called this. The cocoon is called as pupa. You can see the image of a pupa. How does it look here? That's a pupa. Okay, and then this pupa, inside the pupa, the butterfly comes. So the caterpillar after eating leaf, it makes pupa. Okay, and because to take a butterfly, from that to develop a butterfly, the caterpillar forms a pupa, and then this butterfly once again lay eggs, and then become caterpillar eats, then it become pupa, then butterfly. Like that, it is, this whole process is repeating again and again. So now I will explain you in Hindi. Reptiles such as turtles and crocodile also lay eggs. Reptiles जो होते हैं वो जैसे कि turtles और crocodiles, so ये सब भी अंडे देते हैं, ठीक है? They do not look after their eggs. Okay, मतलब अभी वो अंडे दिए तो उसके पास ही बैठ के नहीं देखते, वो चले जाते हैं. They move away, वो चले जाते हैं. Turtles live in water, but they lay eggs on land. जो टर्टल्स होते हैं वो पानी में रहते हैं, पर वो अंडे लैंड पे देते हैं, ठीक है? जो टर्टल्स होते हैं they make a hole in the sand on the beach. जो टर्टल्स होते हैं वो एक होल बनाते हैं बीच पे. ओके, lay eggs in the hole and cover the eggs with sand. फिर क्या करते हैं जो टर्टल्स होते हैं वो होल्स में eggs जो होता है lay eggs, और फिर क्या करते हैं वो उस अंडे को पूरा सैंड से कवर कर देते हैं. ओके, क्रोकोडाइल lay their eggs in a hole in the ground. जो क्रोकोडाइल होते हैं वो भी एग्स को देते हैं ग्राउंड में एक होल करके, एक जो एग्स होते हैं वहां पर देते हैं, और उसके बाद वो उन्हें सेम कवर करते हैं, ठीक है? The eggs of the most reptiles have a soft shell. सारे रेप्टाइल्स के पास जो अंडे होते हैं उनका जो शेल होता है वो शेल सॉफ्ट होते हैं, ठीक है? जैसे कि अभी बर्ड का हार्ड शेल होता है ना. ओके, बटरफ्लाई. सो द बटरफ्लाई एक इंसेक्ट है, तो इंसेक्ट जो होता है वो भी अंडे देते. सो बटरफ्लाई एक इंसेक्ट है. द बटरफ्लाई ले एग्स अंडर साइड ऑफ द लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स. जो बटरफ्लाई होते हैं वो अंडे देते हैं दूसरे प्लांट्स में, मतलब कोई से भी प्लांट्स के जो लीफ होते हैं उसके अंदर देते हैं, ठीक है? The eggs hatch out into larvae that resemble small worms are called caterpillars. जो eggs होते हैं वो hatch होते हैं, जैसे कि वो टूटते हैं, और टूटने के बाद उसे से छोटे छोटे लार्वे निकलते हैं. वो लार्वे स्मॉल वर्म्स की जैसे, उस स्मॉल वर्म्स को बोलते हैं कैटरपिलर.
ओके, सो ये है लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। सो पहले जो अडल्ट बटरफ्लाई होता है वो अंडा देता है, उसके बाद अंडा कहाँ देता है, लीफ के अंदर, और उसके बाद क्या होता है, कैटरपिलर होता है, उस अंडे से निकलता है, और उसके बाद कैटरपिलर खाता है, ईट लीव्स, उसके बाद वो प्यूपा में बदलता है, और प्यूपा में बदला क्यों, बटरफ्लाई को निकालने के लिए। फिर प्यूपा में बदलता है, फिर बटरफ्लाई निकलता है, और फिर एक आता है, फिर कैटरपिलर खाता है, फिर प्यूपा बनता है, ऐसे ही पूरा प्रोसेस चलते रहता है। तो प्यूपा कैसे दिखता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, वो है प्यूपा। ओके, सो अभी हम लोग सीखेंगे, सो let's see here what is this. The insects such as cockroaches and grasshoppers have 3 stages in their life cycles. Wow, only 3 stages they have in their life cycle. Which are which? Cockroaches and grasshoppers. So the eggs of these insects hatch and a larva called nymph comes out. So the eggs of these insects, grasshopper and cockroach, hatches. This insect's eggs hatches and a larva come out. This larva is known as nymph. Okay, the nymph sheds its skin several times to transform into an adult. Okay, so the nymph is there that shed their leaf to transform into an adult. Okay, so this process is called molting. So here life cycle of a cockroach and grasshoppers are actually same. So now let's see here. So first the adult grasshopper or cockroach lay their eggs. Okay, and from that eggs, the larva comes, that called as nymph. That nymph shed the leaf, shed their skin. Okay, and from that, the nymph become an adult grasshopper or cockroach. So this process will be repeating. Okay, so now आपको हिंदी में समझाती हूँ. The insects such as cockroaches and grasshoppers have 3 stages. जैसे insects होते हैं, cockroaches और grasshoppers, 3 stages है उनका life cycle में. So the eggs of these insects hatch and a larva called nymph comes out. So जो इन insects का जो eggs होता है वो टूटता है, उससे larva आता है, उसे बोलते हैं nymph. ठीक है. The nymph sheds its skin several times to transform into an adult. जो nymph होते हैं कॉकरोच और ग्रासहॉपर के, वो अपना स्किन को several times शेड करते हैं. ठीक है, क्यों? उन्हें adult बनने के लिए. सो ये प्रोसेस जहाँ nymph अपना जो स्किन शेड करते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं माउंटिंग. ठीक है, सो ये है लाइफ साइकिल ऑफ कॉकरोच एंड ग्रासहॉपर. सो पहले जो अडल्ट ग्रासहॉपर या फिर कॉकरोच होते हैं वो अंडे देते हैं उनके. ओके, उस अंडे से लार्वा निकलते हैं ग्रासहॉपर और कॉकरोच का, और उस निम्फ वो जो लार्वा होता है कॉकरोच और ग्रासहॉपर का, उसे बोलते हैं निम्फ, और फिर ये निम्फ अडल्ट बनता है. ओके, सो कॉकरोच और ग्रासहॉपर का सेम लाइफ साइकिल है. ओके,